हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम कर रहे हैं भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर से। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.4 का हम प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 के सारे पार्ट्स करवा दिए हैं और अब हम मूव करते हैं हमारे पार्ट 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। याद कीजिए क्या कर रहे हैं हम 2.4 वाली एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस का डिवीजन। ठीक है, भाग कर रहे हैं किसका, फ्रैक्शंस का या फिर भिन्नों का भाग। कैसे करते हैं हमने किया था बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड इन प्रीवियस क्लासेस, सो यू कैन वॉच। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम भिन्नों का भाग करते हैं। ठीक है, 7/3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 7/3 डिवाइडेड बाई 2 कैसे करेंगे? ये एक फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करना है एक होल नंबर से। 2 इज द होल नंबर हियर, पूर्ण संख्या है, एंड 7/3 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड। तो ये चैप्टर जो है आपका सारा रेसिप्रोकल मेथड पे ही बेस्ड है। तो अभी तक तो मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स कराई थी बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स मैंने इसको किया था, बट अब मैं ये जो भी प्रॉब्लम करूंगी बाय यूजिंग सिंगल मेथड, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मेथड यूज करके हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये अभी हम इस प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। तो हमारा ये याद कीजिए 7/3। तो हम फर्स्ट पार्ट को अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? 7/3 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने आपको बताया था इन बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड या फिर व्युत्क्रम विधि का जब हम यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, डिवीजन साइन इज चेंजेस इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन। तो 7/3 एज इट इज रहेगा एंड दिस डिवीजन साइन इज चेंजेस इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज द होल नंबर, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज व्हाट वी गेट, व्युत्क्रम। या फिर इसका इन्वर्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 का व्युत्क्रम 1/2। क्या बन जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका व्युत्क्रम 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? 7 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऊपर वाली न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ होता है। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 एंड डिनोमिनेटर में 3 एंड द डिनोमिनेटर में 2। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 3 2 जा 6, व्हाट वी गेट 7/6। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7/6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 4/9 इट्स अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अ होल नंबर। ठीक है, एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं एक होल नंबर से, तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड या फिर व्युत्क्रम विधि का यूज करेंगे। ओके, तो व्युत्क्रम विधि का अगर हम यूज करते हैं तो 4/9 एज इट इज, डिवीजन साइन इज चेंजेस इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन, and the reciprocal of 5 is what we get, 1/5. So I can now multiply the numerator with numerator and denominator with denominator. What we get? 4 1s are 4, 5 5s are 25. So the answer we get is 4/25. Now move to the next part. 6/13 is a fraction and 7 is a whole number. We divide a fraction with a whole number. What we get? When we multiply a fraction with a whole number, how we can change it? First we can write as it is this number 6/13, and we can change this division sign into a multiplication sign because we are using reciprocal या फिर व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या करते हैं, डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, एंड द व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज 1/7। सो मल्टीप्लाई 6 1s are 6 एंड 13 7 जा 7 3 जा 21, 21 का 1 एंड 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9 91। सो 13 7 जा is 91. What the answer we get? 6/91. Now move to the next part. This is a mixed fraction and divided by a whole number. First we can convert this mixed fraction into a simple fraction. What we get? 4 3s are 12 plus 1, we get 13/3 divided by 3. What we get? 13/3 divided by 3. So by using reciprocal method I can write this 13/3 and this division sign changes into a multiplication sign, and the reciprocal of 3 is 1/3. So the answer we get is 13 1s are 13 and 3 3s are 9. So the answer we get is 13/9. I can solve these problems
I hope you can understand these problems. And now move to the next part. Okay, so now we will move to the next part. और next part है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का. क्वेश्चन नंबर it's part 5. 3:1/2 divided by 4. 3:1/2 is a mixed fraction, and this is divided by a whole number. This is 4. 4 is a whole number, and this one is a mixed fraction. So what we will do first? First, we have to convert this mixed fraction into a simple fraction. Then we will divide this, okay, by using reciprocal method. So I can convert this mixed fraction into a simple fraction. 2 3s are 6 plus 1, 7 upon 2 divided by 4. Okay. By using reciprocal method, what we can do? We can write this 7 upon 2 is added as it is, and this division sign it changes into a multiplication sign, and this 4 we get the reciprocal of 4 is 1 upon 4. Now we can multiply this numerator with this numerator. 7 1s are 7 and 4 2s are 8. What we get, the answer is 7 upon 8. Now move to the next part. 4:3 upon 7 divided by 7. 4:3 upon 7 is a mixed fraction and 7 is a whole number. So a mixed fraction divided by a whole number. First we have to convert this mixed fraction into a simple fraction and then divide with a whole number. What we get? 7 4s are 28 plus 3. 28 plus 3 is 29, 30, 31. 31 divided by 7 divided by the 7. Now by using reciprocal method, what we get? 31 upon 7 as it is. This division sign changes into a multiplication sign, and the reciprocal of 7 we get is 1 upon 7. The numerator part is multiplied with numerator part, and the denominator part is multiplied with denominator part, and we get the answer is 31 multiplied with 1 is 31, and 7 7s are 49. So the answer is 31 upon 49. Okay, so now move to the next part. This is over here, and now we move to the question number 4. Let's move. This is question number 4. It's last part of exercise 2.4. So this is ज्ञात कीजिए. First part 2/5 एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है किसके साथ? दूसरे फ्रैक्शन के साथ. हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था? अ होल नंबर डिवाइडेड बाई अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई अ होल नंबर. नाउ वी विल मूव टू द फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई अनदर फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ डिवीजन देख रहे हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं. 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2. तो इस चैप्टर में हमने रेसिप्रोकल मेथड का यूज किया था, व्युत्क्रम विधि का. तो वही विधि हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, और इस क्वेश्चन में भी हम वही विधि या फिर व्युत्क्रम मेथड या फिर रेसिप्रोकल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ मूव. फर्स्ट पार्ट, दिस इज 2/5 डिवाइडेड है, डिवीजन का साइन है. तो मैंने आपको बताया था जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो डिवीजन का साइन चेंजेस इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन. सो वी गेट दिस डिवीजन साइन इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन, and this 1/2, the reciprocal of 1/2 is 2. Okay, so we move to the question. This is question number 4. ज्ञात कीजिए 2/5 divided by 1/2. So we will solve this problem by using reciprocal method या फिर व्युत्क्रम विधि. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2/5 को ऐसे ही लिखेंगे, और this division sign changes into a with sign multiplication sign, and the reciprocal of 1/2 is इसका इनवर्ट फॉर्म. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1 या फिर 2/1 को हम 2 भी लिखते हैं. ठीक है, और न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर के साथ. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2s are 4, 5 1s are 5. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/5. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. This is one fraction, this is another fraction. We divide one fraction with the another fraction. 4/9 divided by 2/3. What we will do? 2/9. Sorry. Now move to the next part. Next part is 4/9 divided by 2/3. One fraction divided by another fraction, and 4/9 as it is. This division sign changes into multiplication sign because we are using reciprocal method, and this 2/3, reciprocal of 2/3 is 3/2.
Now numerator multiplied with numerator, 4 3s are 12, 9 2s are 18, and now we can simplify this by using 2 6s are 12, 2 9s are 8, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now we get this is 2 upon 3. The answer we get is 2 upon 3, because we have to write fractions in the simplified form. Okay, so I can simplify this and write this is 2 upon 3. Now move to the next part. Next part is 3. One fraction divided with another fraction. The first fraction is what? 3 upon 7. I can write 3 upon 7 as it is. Now by using reciprocal method, we convert this division sign into a multiplication sign. So we can use here multiplication sign, and the reciprocal of 8 upon 7, what we get? 7 upon 8. So we multiply this numerator with this numerator and this denominator with this denominator, but I can see here 7 in numerator and here 7 in denominator, so I can cancel out these two here only. So we get 7 ones are 7, 7 ones are 7, 1 3s are 3, and 1 8s are 8. So I can get 3 upon 8 as an answer. Okay. Okay, now move to the next part. This is part 4. Question number 4 ka part 4. Okay. What is it? This is a mixed fraction divided with a simple fraction. First we have to convert this mixed fraction into a simple fraction and then divide with the another fraction. Okay. So we know that how we can convert a mixed fraction into a simple fraction, because we have done it already so many times. Okay. So I can convert it simply. 2 3s are 6 and plus 1, what we get? 7. तो क्या बन जाएगा ये? 7 upon 3 divided by 3 upon 5. Okay. Now this fraction divided with this fraction. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो fractions को divide कर रहे हैं by using reciprocal method. So 3 upon 7 as it is, 7 upon 3 as it is, and this division sign changes into a multiplication sign, and the reciprocal of 3 upon 5 we get is 5 by 3, inverted form, 5 by 3, and then we multiply the numerator with the numerator part and denominator with the denominator part. 7 5s are 35 divided by 3 3s are 9. The answer we get is 35 upon 9. Okay, now move to the next part. I hope this is visible and you can understand it, how we can solve by using reciprocal method. Now move to the next part. This is also a question number 5, question number 4, part 5th. This is a mixed fraction divided with a simple fraction. First we have to convert this mixed fraction into a simple fraction. What we get? 3 2s are 6 plus 1. Okay, 6 plus 1 is 7. We can write 7 upon 2 divided by 8 upon 3. This fraction divided with this fraction, what we get? 7 upon 2 as it is, and this division sign changes into multiplication sign because we have done reciprocal here, and the reciprocal of 8 upon 3 is 3 upon 8, and the numerator part multiplied with numerator part and denominator part is multiplied with denominator part. So we get here 7 3s are 21 and 8 2s are 16. The answer we get is 21 upon 16. Now move to the next part. This is part 6. 2 upon 5 multiplied with, 2 upon 5 divide with 1 is to 1 upon 2. What we get? 2 upon 5 divide with 1 is to 1 upon 2. 2 upon 5 is a fraction and this is a mixed fraction. First we have to convert this mixed fraction into a simple fraction. What we get? 2 upon 5 as it is, division sign, and change this into a simple fraction. 2 1s are 2 plus 1 3 upon 2, and now we can solve these two fractions division by using reciprocal method. What we get? 2 upon 5 as it is, division changes into multiplication. Reciprocal of 3 upon 2 is 2 upon 3. We have done so many times. 2 2s are 4 and 5 3s are 15. So the answer we get is 4 upon 15. Now move to the next part. What? This is part 7. 3 is to 1 upon 5 divided with 1 is to 2 upon 3. Both are mixed fractions. So first we have to convert both mixed fractions into a simple fraction. Then we have to solve the division problem. How we can do this? 3 is to 1 upon 5. We can simplify this.
So 5 3 are 15 plus 1, 16 upon 5 divided by 3 ones are 3 plus 2, 5 upon 3. Now by using reciprocal method, what we can do? We can write simple 16 upon 5, division sign changes into multiplication sign, and the reciprocal of 5 upon 3 is 3 upon 5. न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर 16 3s are 6 3s are 18 का 8, 1 carry, 3 1s are 3 and 1 4, 48 divided by 5 5s are 25. So the answer we get is 48 upon 25 because we cannot simplify. Okay, this is the answer. Now move to the next part. What is our next part? First you have to write down this, then move to the next part. Next part 8 is 2 is to 1 upon 5 divided by 1 is to 1 upon 5. Both are mixed fractions. First we have to convert these two mixed fractions into simple fractions, then we have to divide. First I have to convert. How we will convert? 5 2s are 10 plus 1 11 upon 5 divided by 5 1s are 5 plus 1 6 upon 5. Okay, now we can use reciprocal method, so I can write 5 upon 11, division changes to multiplication, and 6 upon 5 changes to reciprocal, 5 by 6, and we can simplify this problem here. 5 divided by 5 and we get 5 ones are 5, 5 ones are 5, and 11 ones are 11 and 1 6 are 6. So the answer we get is 11 upon 6. Okay, so you have seen so many problems by using reciprocal method. I hope you can understand each and every problem, and if you like my video, just please do like, share and subscribe, and thank you for watching my video.